And recognition of the contributions of civil servants of India, the pillars of public administration. India observes April 21 as Civil Services Day. Their unflinching commitment, dedication and zeal is what stands in what keeps them and makes them stand out from the rest. Every year, India observes the Civil Services Day on April 21. It's not just a day of celebration, but a day to honor the unwavering commitment, zeal and grit of India's civil servants. The significance of this date traces back to 1947, when Sardar Vallabhbhai Patel addressed the probationers of administrative service officers for the first time in India's national capital, Delhi. The Prime Minister expressed happiness over this year's theme, Holistic Development of India, and said that this is not just a theme, but a commitment and promise to the people of the nation. इस बार सिविल सर्विसेज डे के थीम होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रखी गई है। ये सिर्फ एक थीम नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, देश की जनता से हमारा वादा है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी नो विलेज लेफ्ट बिहाइंड, नो फैमिली लेफ्ट बिहाइंड, no citizen left behind. Reiterating the concept of Panch Pran, which he introduced from the Red Fort, the Prime Minister remarked that civil servants are the key carriers of these principles. साथियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी। विकसित भारत का संकल्प गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता की शक्ति और कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना, आप सभी इन पंच प्राणों के प्रमुख वाहक हैं। PM Modi gave a new mantra for good governance, asking civil servants to follow the principle of Nagrik Devo Bhava, likening it to the ethos of Atithi Devo Bhava, and called on civil servants to see themselves not just as administrators but as architects of a developed India. संवेदनशील रहिए, गरीब की आवाज सुनिए, गरीब की तकलीफ समझिए, उनका समाधान करना अपनी प्राथमिकता बनाइए। जैसे अतिथि देवो भव होता है, वैसे ही नागरिक देवो भव, इस मंत्र को लेकर के हमें चलना है। During the ceremony, PM Modi conferred the prestigious Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration to 14 shortlisted districts and organizations chosen from 1,588 nominations. Siddharth Bhardwaj report for DD India.